पृष्ठभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे. Okay, so today we are going to finish chapter number 5, and we have discussed many things till now in chapter 5, right? It is one of the very important in Bhagavad Gita. So let us start. So today we are going to learn something very wonderful, that is basically peace formula. Every one of us want peace, right? शांति चाहिए हम सभी को, एकदम कोई टेंशन नहीं, किसी तरीके का झंझट नहीं, and we all want to remain peaceful actually. लेकिन still बहुत ज़्यादा दुख रहता है, बहुत ज़्यादा अशांति रहती है जीवन में, हम लोग देखते हैं. So today's basically section will stress on how we can really be peaceful. So Prabhupada tells the story of Vasishtha Muni. Vasishtha Muni was basically a king earlier before becoming Vasishtha Muni, Valmiki Muni. So Vasishtha Muni was हम लोग आज भी पता है रामचंद्र जी के गुरु हैं, and he was very powerful sage, बहुत ही ताकतवर ऋषि थे. तो एक बार वहाँ पर राजा जो है, एक बहुत ही पावरफुल राजा थे, वो वहाँ से निकलते हैं. एंड जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उनको, उनकी सेना को बहुत भूख लगती है, प्यास लगती है, जंगल था, और ये जो राजा तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था. न जाने कितने ही सारे राज्यों को इन्होंने जीता था, और इसकी एक आदत सी बन गई थी, कोई भी राज्य पे आक्रमण करना, उसको अपने कब्जे में करके उसके माल वगैरह लूट के और फिर अपने राज्य के अधीन कर लेना. तो ऐसे ही किसी राज्य को लूट कर ही आ रहे थे, बट खाना इनका खत्म हो चुका था, एंड ऑल हिज आर्मी वाज हंग्री. सो वो सेनापति को बोलते, जाइए देख के आइए कोई अगर खाने का बंदोबस्त हो जाए. तो सेनापति जाते, पास में वशिष्ठ मुनि का आश्रम था, वहां जाके बोलते हैं. तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं, यस, आपके लिए जो भी चीज की जरूरत है, विल अरेंज दैट, डोंट वरी. एंड विद इन सम मिनट्स और यू कैन से सेकंड्स ओनली, वशिष्ठ मुनि बहुत ही शानदार फीस्ट का आयोजन कर देते हैं. एंड नाउ दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर द किंग, दैट हाउ कुड इन दिस जंगल Vasishtha Muni could organize such kind of a feast for the entire army, not locally. Then he was basically surprised, and then he comes to know that this Vasishtha Muni is having कामधेनु काव, जो कि पल भर में सारी इच्छाएं पूरी कर देती है. So then he started fighting with Vasishtha Muni over that cow, that you give this cow to me because जंगल में आप इसका क्या करेंगे. बट वशिष्ठ मुनि वाज टेलिंग, दिस इज लाइक माय मदर, यू, दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ एनिमल जिसको जब मन किया कोई भी लेके चला गया. सो देन वशिष्ठ मुनि अलोन, ही एक्चुअली डिफीटेड not only the king, his entire army also, and this brought a lot of frustration in this life of the king. So basically पहले के जीवन में, पहले के समय में क्या रहता था, ब्राह्मणास they were given higher position in the society than any क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. आज के समय में क्या हो गया है कि आपको बस पैसा कमाना आना है, आप ज्यादा कमा रहे हैं, then you will be considered highest in the society. You should be very powerful, you will be considered highest in the society. But before that, in वैदिक समय में जो है, ब्राह्मण को हाईएस्ट माना जाता था. ब्राह्मण जो है वैसे बहुत साइलेंट रहते थे, अपने तपस्या में, साधना में, अपने जो है जो भी अनर्थ है उनको खत्म करने में बिजी रहते थे. लेकिन जब जरूरत पड़ता था तो ब्राह्मण जो है क्षत्रियों को भी कंट्रोल कर सकते थे, क्षत्रियों को भी डांट सकते थे, क्षत्रियों को भी जो है अपने कंट्रोल में, वश में कर सकते थे. दे वर ब्राह्मणस, बिकॉज ब्राह्मणस आर नॉट हैविंग जस्ट द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, बट दे आर हैविंग शस्त्र की भी बहुत अच्छी इनके पास में विद्या हुआ करते थे. दे वर ब्राह्मणस एक्चुअली. So one such example comes of King Veena. Brahmanas, they killed this King Veena just by their words. ब्राह्मण इतने पावरफुल होते थे, अपने वर्ड्स की ताकत से किसी को भी खत्म कर सकते थे. जैसे हम लोग कहते हैं ना, दुआ बद्दुआ देना. ब्राह्मण अगर किसी को श्राप दे देता था, बद्दुआ दे देता था, तो वो आदमी
खत्म हो सकता था। किंग वेण जो है बहुत ही ज्यादा अत्याचारी राजा था, ब्राह्मणों कई बार उसको समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना। तो जस्ट सिंपली बाय कर्सिंग दे किल किंग वेणा, यू सी। सो लाइक दैट ब्राह्मणा पर वो हर बार इस तरह के एक्शंस नहीं करते थे, क्योंकि वो अपना जो तपस्या का प्रभाव उसको बचा के रखना चाहते थे, और उस प्रभाव को, शक्ति को वो सेल्फ रियलाइजेशन में एंगेज करते हैं। जस्ट लाइक आज हम हमारे शक्ति को एंगेज करते हैं मटेरियलिस्टिक सेंस एंजॉयमेंट में, लेकिन जो ब्राह्मण होते थे दे यूज टू एंगेज दैट एनर्जी इन सेल्फ रियलाइजेशन। और न केवल ब्राह्मण, बल्कि ब्राह्मण जिस राजा को गाइड करते थे, उस राजा को भी सेल्फ रियलाइजेशन में एंगेज कर देते थे। और फिर जो वो राजा है अपने प्रजाजन को, वो ब्राह्मण भी प्रजाजन को जाके जो है पर्सनली गाइड करते थे, और पूरी की पूरी जो राज्य रहता था, पूरी की पूरी सोसाइटी रहती थी, वो सेल्फ रियलाइजेशन में एंगेज रहती थी। बट आज का ऐसा दुर्भाग्य हो गया, चूंकि हाईएस्ट पोजीशन पे ब्राह्मण नहीं है, so that's why there is no inclination in the society people, in the citizens about self realization, right? So anyway, so this king Kaushal, he decided to become, actually he became very frustrated। तो वो क्षत्रिय हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी जो है वशिष्ठ मुनि के जैसा पावरफुल ब्राह्मण बनूंगा करके। सो देन ही वेंट कि ब्राह्मण कैसे बना जा सकता है, ब्राह्मण बनने के लिए मुझे अपने क्रोध को खत्म करना पड़ेगा, अपनी एनवी को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ। सो देन ही वेंट फॉर तपस्या। एक्चुअली तपस्या है ना, भगवद गीता 18वें अध्याय में भी आता है कि यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो हम सभी को जो है यज्ञ दान तपस ये सब करते रहना चाहिए। तो ऑफकोर्स कलयुग के लिए यज्ञ क्या बताया गया है, बस यज्ञ इज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो यज्ञ हमारे लिए सुबह जल्दी उठना, विदाउट फेल वी शुड ऑल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बिफोर ब्रह्म मुहूर्त only we should be ready, so that full brahma muhurta time we either chanting, attending mangala, or getting lectures of Krishna, like no irregulations are there in their life. They're so happy in that. I used to tell disciple is discipline, is happiness. So Brahmana, then he thought, okay, if we want to become happy or not happy, want to become Brahmana, then anger, envy, lust इन सबको करना पड़ेगा उसके लिए। We all know जो anger रहता है हमारे अंदर बहुत तरह की डिजीजेस को क्रिएट कर देता है। इनफैक्ट आयुर्वेद में भी प्रिंसिपल बताया गया है कि इफ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज, be happy, don't take any kind of tension and any kind of frustration. And in fact, modern science also understand this concept very well, that I should never ever become angry, I should become frustrated, disappointed in my life, because it will be having a hazardous effect on my health. So we are generally disturbed because of our frustration, we are generally disturbed because of our anger, right? So just like for example small kids, or you are in college or you are going for job, तो 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, 3 hours 4 hours traveling. Apart from that traveling, you have got the job of 8 hours 9 hours 10 hours. So it brings lot and lots of disappointment, lots and lots of frustration in the life of a person. छोटा बच्चा है, I have seen that small kids, they are taking heavy bags with them, and when you go to the college, that time suddenly you get the tension of the job, and you want to get some other hook and crook, you want to get the job. So person is always in anxiety, is always disturbed, is having some kind of frustration. So as soon as you are frustrated, you are angry, so there is totally a different kind of energy which flows through your body, right? पूरी बॉडी में एक अलग ही तरीके का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग गौर से देखें तो नेगेटिव पॉइंट, immediately you will feel some kind of negative energy inside your whole body as soon as you become disturbed or you become angry. Body actually becomes polluted with
tamo guna. So one should never ever become angry. So Brahman means he's totally able to control his anger, totally able to control his frustration, disappointment. But Prabhupada tells one important concept. In fact, Bhagavad Gita bhi bata rahi hai. Many examples are there. If somebody criticizes a devotee or guru or you can say Krishna, then you should not become like keeping quiet. You should show your anger. If you don't show your anger, according to the principles of Shastras, you fall down from your position of devotional service. Right? So basically, the holistic picture is that step by step one should try for progressing in spiritual life. So anyway, so this Vishwamitra, this Raja Kaushal, he tries for then becoming Brahmana and started doing lots and lots of tapasya. घनघोर तपस्या शुरू कर दी उन्होंने. And because of 1000 year तक उन्होंने तपस्या की, then इंद्र को जो चिंता हुई, उन्होंने वहां पर रंभा को भेजा, सॉरी मेनका को भेजा. So मेनका जो है, she attracted this Raja Kaushal and he married her, and then Shakuntala पैदा होती है. Then he realized, अरे ये क्या कर दिया मैंने. फिर दोबारा वो तपस्या करने लगते हैं, फिर दोबारा तपस्या करते हैं. तो इस बार वो रंभा को भेजता है, और इस बार वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि इंद्र बार बार भेज जाता है. फिर से उनका जो पूरा बॉडी पॉल्यूटेड हो जाता है. एंड देन अगेन he started doing tapasya because he lost all his whatever he has earned after doing so much tapasya. So it's a very important thing that one should never ever become angry for his own thing. He should become angry rather for Krishna and his devotees. So that is actually personal behavior of a devotee. This is step by step progress, right? So now this is what recommended by Krishna to Arjuna in these shlokas, which I am going to read in front of you now. And then finally Bhagavad Gita के साथ खत्म होगा. लास्ट श्लोक और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. काम क्रोधो विमुक्तानां यतीनां यति चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्. Those who are free from anger and all material desires. So very important word is here. आप इसको नोट डाउन करिएगा. जो एंगर से और मेटल डिजायर, काम से मुक्त हैं, who are self-realized, self-disciplined and constantly endeavoring for perfection. So all यहाँ पर जितने भी शब्द यूज हो रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आर सेल्फ रियलाइज्ड. हमें चेक करना हम सेल्फ रियलाइज्ड है नहीं. सेल्फ डिसिप्लिन, ऐसा नहीं कि कोई आके हमें सुबह बार बार उठा रहा है. प्लीज वेक अप, प्लीज वेक अप. प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि डिसाइपल की प्रोग्रेस किस चीज पर डिपेंड करती है कि यू आर eager or not for attending मंगला आरती. मंगला आरती का सुबह टाइम होने वाला है. And is he really self-disciplined or not? Is he really eager or not to attend मंगला आरती? If he is thinking rather than that, oh बढ़िया रहेगा टाइम निकल जाए, it means he is still on neophyte stage, very very neophyte stage. But a devotee should always be hankering whether I'll be able to get up or not on time for Mangala Aarti. Even a single minute I should not be late for the Mangala Aarti. He must be self-disciplined. And next is, if he is not perfect, all of us are not perfect, constantly हमें endeavor करते रहना है perfection के लिए. And ऐसा perfection के लिए हमें जब endeavor करते रहेंगे पूरे जीवन भर में endeavor करना है. जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वहां से लेके वो बड़े होने तक पूरा endeavor करता रहता है. इसके लिए पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए. So I'll just show you a small video. Just a minute. If I got this video. Yes. So I got this video. How we spend our life. I hope हमने उसका पैसा दे वीडियो देखा.
So this is actually the whole life we go through. Like this, we pass our life in Kam, Krodha, Vimuktana, Yatina, Chetasa. So we should be free from Krodha, lust, and rather than that, we earn that more and more. हम लोग और उसको ज़्यादा earn करना शुरू कर देते हैं. And like that, we'll always be disturbed, we'll always be frustrated. But we are here not to learn these things, we are here to learn peace formula. Right? So Krishna is telling in the next shloka, what should a yogi do? Sorry. So here he is telling about Ashtanga Yoga first, and then in the last he'll tell the final peace formula. Okay, so that we learn now. तो कृष्णा बोल रहे हैं अगले श्लोक में, हमने समझ लिया पिछले श्लोक में भगवान अर्जुन को रिकमेंड कर रहे हैं काम और क्रोध को छोड़ने के लिए. वही सेल्फ डिसिप्लिन है, वही सेल्फ रियलाइज्ड है. स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो पंचपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भया क्रोध यह सदा मुक्त एव सः. So what is the translation now? Shutting out all external sense objects. ये अष्टांग योगी के लिए यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं. So he is giving this thing deliberately, जानबूझ के भगवान अर्जुन को यहाँ पर अष्टांग योग की चीज में पूछ रहे हैं ताकि अर्जुन जो है एक प्रश्न पूछ सके कि मुझे अष्टांग योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो अर्जुन जो है भगवान उसको फाइनली एक तरीके से बताता है, तो अर्जुन मना कर देता है. लेकिन फिर भी जो योगी अष्टांग योगी हैं वो किस तरीके से अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं वो यहाँ पर बताया गया. वो पूरी जो भी एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट है, आंखों के लिए कोई सुंदर वस्तु, कान के लिए सुंदर म्यूजिक, जीवा के लिए कुछ अच्छा भोजन, सबको बंद कर देता है. Keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, thus controlling the mind, senses, and intelligence, the transcendentalists become free from desire, fear, and anger. So here you can see, जैसे काम, क्रोध and भय तीनों से मुक्त हो जाते हैं जब वो योगी इस तरीके से चीजें करता है. But is always in this state is certainly liberated. और ऐसा व्यक्ति किसमें होता है? Liberated stage में होता है. So it's such a wonderful solution which Krishna is telling to Arjuna for peace, right? लेकिन इसमें भी एक important चीज है, केवल ये काफी नहीं है. अब उसके आगे peace के लिए क्या करना होगा? That we'll try to understand. Example comes of Dhruv Maharaj. Dhruv Maharaj also did lot of penances, तपस्या की खूब किया. 6 महीने के अंदर उन्होंने, पहले महीने में उन्होंने केवल जो है पत्तियां खाई, 3 महीने तक केवल पत्तियों पर गुजारा किया. उसके बाद में अगले 1 महीने में केवल पानी पे गुजारा किया. फिर उसके लास्ट महीने में जो है 6वें महीने में उन्होंने केवल हवा पे गुजारा किया और लास्ट मंथ में हवा भी लेना छोड़ दिया. And he did that kind of Ashtanga yoga process. You see, his sleep reduced, his bodily food reduced, his everything got reduced actually, which is not possible in Kali Yuga. This Ashtanga yoga is not possible in Kali Yuga. It was possible in Satya Yuga because people used to live for 1 lakh year. So Dhruv Maharaj, he did lot of penances. So and he was able to control his desire. उनके desire क्या थी कि मुझे अपने पिताजी से भी ऊंचा राज्य चाहिए करके. So that was one process, but Krishna is telling even easier process than this yoga. Now, है ना, उससे भी अच्छा प्रोसेस बता रहे हैं जिसके माध्यम से हम हमारे एंगर को, लस्ट को, ग्रीड को, जिससे हम सभी सफर कर रहे हैं. Every one of us is suffering, right? So he's telling even a wonderful solution than that, and that is next shloka, the last shloka of this chapter. So I hope you are able to see. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यात्वा माम शांति मृच्छति. क्या बोल रहे हैं? भोक्ताराम यज्ञ, तो 3 चीजों को समझना है. अगर हम चाहते हैं बहुत ही शांत रहें, हम पीसफुल रहें या पीसफुल हो जाएं, तो 3 चीजें हमें समझनी होगी. कृष्ण ही हर चीज के भोक्ता हैं.
आई एम नॉट द एंजॉयर, कृष्णा इज द ओनली एंजॉयर। इनफैक्ट हम कुछ भी करने जा रहे हैं तो हमें यह सोचना है कि उस वक्त उस काम से कृष्ण को आनंद मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं तो अपना आनंद के लिए पीछे नहीं पा रहा हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसम, जितना भी आप तपस्या कर रहे हो उसका, ओके, तपस्या करने से हमें आनंद मिलता है। तो जितने भी, लेट्स से यू आर वर्किंग सम एमएनसी, तो उसका जो रिजल्ट है वी शुड गिव इट टू कृष्णा रादर देन एंजॉयिंग बाय आवरसेल्फ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं एंजॉय करूंगा इस चीज को, अल्टीमेटली इज गोइंग टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज कृष्णा इज डिक्लेयर्ड भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। So just like a father is there in the family, if you start thinking about the father, yes, my father is like this, is a I should give him enjoyment, all kind of enjoyment, then family will be happy only because father is happy. आप फादर को दुख पहुंचाना शुरू कर दो, फादर को एंजॉयमेंट देने के बाद खुद ही एंजॉय करने लग जाओ सारी चीज, देन यू विल बी आल्सो फ्रस्ट्रेटेड। Then second is Sarvamo Loka Maheshwaram. They will try to understand that also he is the Malik of everything in the whole creation. And Suhudam Sarvbhutaram, सबसे बढ़िया मित्र हैं सभी जीवों के। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, such a person will attain eternal peace. Such a person will attain eternal peace. So now, basically, sometime if we see we are on bodily platform, sometime in fact some of the people they reach on mental platform. मेंटल प्लेटफॉर्म पर कैसे माइंड के लेवल पे सोचते हैं, जैसे कवि हो गए, साइंटिस्ट हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ये मेंटल प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। सो उनको ज्यादा हेडेक नहीं होता चीजों का। देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो प्रॉब्लम, बिकॉज बॉडी को महसूस हो रहा है, माइंड को क्या गर्मी लग रही है, सो दे आर ओके। खाना नहीं खाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइंड के लेवल पे अगर कुछ प्रॉब्लम होना शुरू होता है, दे विल लूज देयर शांति। सो हमको कई बार लगता है दिस पीपल आर वेरी पीसफुल, बट दे विल आल्सो लूज देयर पीस। सो हमें मेंटल प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करना। बॉडी प्लेटफॉर्म पे तो हम दुखी हो ही जाते हैं, मेंटल प्लेटफॉर्म पे भी आदमी दुखी रहता है, इंटेलिजेंस लेवल पे भी दुखी रहता है। तो दिस डिससैटिस्फैक्शन इज देयर ऑलवेज। व्हाई दिस डिससैटिस्फैक्शन इज देयर? क्योंकि जो सेंस ऑब्जेक्ट है उसको उसका सेंस, जो भी सेंस है उसको सेंस ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है। माइंड का सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? माइंड का सेंस ऑब्जेक्ट है उसको थॉट्स चाहिए, अच्छे अच्छे विचार चाहिए। जब आप उसको वो अच्छे विचार नहीं देते हो, मेंटल प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो वो भी डिससैटिस्फाइड हो जाता है। लाइक दैट वी फील आई एम डिससैटिस्फाइड, राइट? सो बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू लर्न इज, जैसे कि कोई भिखारी होता है, भिखारी जब भीख मांगने निकलता है, उसको कुछ भी दे दो खाने के लिए वो खा लेगा। इनफैक्ट कभी वो डस्टबिन में से उठाता है, कहीं कचरे में से उठाता है, अगर उसको कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत ही मेरे लिए हेल्दी हो सकता है, और भगवान अगर वो अगर पॉइजन हुआ, उसको खाने से उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इन सिमिलर मैनर वी ऑल आर ट्राइंग टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। कृष्णा जो चीज बोल रहे हैं वो नहीं खाएंगे, कृष्णा जो बोल रहे हैं वो एंजॉयमेंट नहीं लेंगे। कौन सा एंजॉयमेंट लेंगे? जो मेरे को अच्छा लग रहा है। सो इट्स जस्ट लाइक beggar eating poison, right? So always will be dissatisfied, frustrated only. Please start understand. So Krishna is giving you assurance that you will achieve shanti, not dissatisfaction. I am your best friend, I am your malik of everything, whatever you own, and apart from that, I am the enjoyer of everything, right? So this is an important concept. Now next thing is basically we should glorify such kind of devotees. हमारे अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, तो डिवोटीज भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, या जो किसी भी तरीके से भगवान के इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, we should appreciate that. Just like some movies comes, उस movies में I remember one movie that one person was there, he was about to die because of cancer or some इस टाइप का कुछ रोग था, and then he goes into the world, enjoys whatever his wishes were there. So many wishes he was carrying, and all those wishes were fulfilled somehow or other, and in the last he died. And so many people like us, they show sympathy. अरे बेचारा देखो कितना स्ट्रगल किया, एंजॉय किया उसके बाद भी, so such a nice person he is. We show our sympathy. मूवी के अंदर एक लड़का है, लड़की के साथ में भागता है, उसके लिए सेक्रीफाइस करता है, हम उस लड़के को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं।
But as soon as somebody is sacrificing for Krishna, we are not glorifying him. So then such people also lose their peace. If anybody is sacrificing anything for Krishna, we should glorify that person. This is also actually important message here from Krishna to Arjuna. He's telling that you please try to understand that if you will sacrifice things for yourself, you will be frustrated. For example, अशोका द ग्रेट, राइट, हम सभी को पता है, इतना लोगों को मारा, उसका हार्ट मेल्ट हो गया, उसका हार्ट क्या हो गया, मेल्ट हो गया. Pandavas killed so many people on the order of Krishna, nothing happened. In fact, Krishna is glorifying that thing. Whole world actually remembers Pandavas till today. Why is it like that? Because actually they did it for Krishna. Ashoka just did for his own satisfaction, mental satisfaction. And ultimately he was actually not satisfied. He has to leave everything. And we do not know, he spread Buddha philosophy and all that thing. But ultimately he has to come in the shelter of Krishna. So we have to remember Krishna, we have to follow what Krishna is telling. Pandavas, even after killing so many people, they went back to Godhead. We kill so many people for country, for the society, for anything, will not go back to Godhead. Unless you do anything, it may be any heinous action, but it must be for the pleasure of Krishna. कोई भी कितना ही खराब काम क्यों हो, लेकिन कृष्णा के द्वारा रिकमेंडेड हो, तो वो कृष्णा के द्वारा ग्लोरीफाई किया जाएगा, भक्तों के द्वारा ग्लोरीफाई किया जाएगा, एंड दैट ब्रिंग्स अल्टीमेट पीस. उसी से हमें पीस मिल सकता है, रादर देन हम हमारे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करते रहे. Right? So this is actually today's shloka, which is giving an important message that you do whatever you are trying to do for the satisfaction of Krishna. And now 6th chapter में भगवान फिर से अर्जुन को अर्जुन के प्रश्न के एवज में बता रहे हैं कि अष्टांग योग क्या होता है और अर्जुन उसको किस तरीके से खारिज करता है. तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है, भगवान अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं, और कर्म योग को भगवान के लिए करना है, ना कि किसी और के लिए करना है, उसको भक्ति योग बनाना है, कि भगवान यहाँ पर जगह जगह बता रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज टेक दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली. Try to do everything, whatever you are doing, for the satisfaction of Krishna. Your studies, your job, your whatever you are doing, then automatically you'll be happy, right?